Okay, today we will discuss about number systems. What are number system and what is history of the number system? So basically, we are going to discuss about mathematics of FSC part one. So if we discuss about history of number system, then first of all, we know that what is set of natural number and what is set of whole number. Similarly, what is set of integer, what is set of odd number, what is set of prime numbers, and what is set of even numbers. Similarly, what are rational numbers, set of irrational number q dash, and r will be set of real numbers. Similarly, c, capital C will be set of complex number. So capital letter will show about set, and small letter will show about elements which are present in a set. So 1, 2, 3 up to so on will be set of natural numbers. So if we look at the history of numbers, history of numbers, then okay, अब हम देख रहे थे कि जो नंबर्स हैं उनकी हिस्ट्री हमारे पास क्या है. Numbers should be distinguished from numbers numerals. There is difference between number and numerals. The symbol to present numbers, the Egyptian symbols used to represent number. The Egyptians invented the first separate numeral system, and the Greek followed by mapping their counting numbers onto colonial and Doric alphabets. Roman numbers are system that use combination of letters from the Roman alphabet remained dominant in Europe until the spread of this period into Arabic numeral system around the late 14th century, and the Hindu-Arabic numeral system remained the most common system of the represented number in the world today. The key to effectiveness of the system was the symbol of zero, which was developed by ancient Indian mathematician around 500 AD. First, use of numbers. So we will discuss about use of numbers. Bones and other artifacts have been discovered with the marks cut onto them that many believe are tally marks. These are tally marks. These tally marks may have been used for counting elapsed time, such as numbers of day, lunar cycles, or keeping records of continent. First of all, अगर हम numbers की history में देखें ना, तो हमारे पास वो Indians और अरेबिक रोमन्स का आता है, उसके बाद इंडियन और अरेबिक सिस्टम हमारे पास आता है. उसके बाद जो नंबर है ना फर्स्ट उनको टेली मार्क्स से शो किया जाता था.
Or a telling system has no concept of place value as in modern decimal notation, which limits its represent of large number. Okay, so the first known system with place value was the Mesopotamian base 60 system. This is Mesopotamian system, and the earlier known base 10 system dates of 3100 BC in Egypt. Okay, now we will come about this discuss about discovery of zero. So the first known documented use of zero dates 628 AD and appeared in Brahmas Putta Siddhante. This is from Braham Gupta in 628. This text of mathematical astronomy contains significant mathematical content, including the good underlying of the role of a zero. So this is history of zero in 628 AD and appeared in the main work of the Indian mathematician Braham Gupta. So credit of zero goes to Braham Gupta, which was Indian. He treated zero as a number and discussed operations involving it, including division. By this time, the 7th century, the concept had clearly reached Cambodia as this system. Khmer numerals are the numerals used in the Khmer language. There is a difference between the numerals and numbers. If we search what is difference in numbers and numerals. So number is expressed with digit while the numeral is word describing a number. So if we look at the pictures, so these are numerals and these are numbers. So this is clear. Similarly, if we look this picture, difference between numerals and numbers. Now numeral 3 represent numeral 3 represent unique value or idea. Numeral 5 represents basically numerals are symbols and digits are the numbers. So this is main difference among them. So discovery of zero goes to Indian mathematicians. Also, there come Babylonians and Egyptians in context of use of zero. Now we will come history of negative number. In mathematics, a negative number represents an opposite in the real number system. A negative number is a number that is less than zero. Negative number are often used to represent the magnitude of a loss or deficiency. So this is history of rational number. Similarly, irrational number. This is simply a concept. Transcendental numbers. If we look transcendental number are like trigonometric numbers, pi. These are called transcendental numbers. So there are two functions: algebraic function and transcendental function. So functions which are not algebraic are called transcendental function. So pi is a transcendental function. So this will be transcendental number. If we look at this is important question, history of pi. The number pi is a mathematical constant, approximately equal to 3.14159. It is defined in Euclidean geometry as the ratio of circles circumference to its diameter, and also has various equivalent definitions. The number appears in many
formulas in all areas of mathematics and physics. So if we search what is तो अब हमारे पास उसके बाद क्या आ जाता है, जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है ना वो हमारे पास आ जाता है। तो ट्रांसेंडेंटल नंबर हमारे पास वही बात आ गई कि जो हमारे पास अलजेब्राइक नहीं होते वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो जाते हैं। उसके बाद इन्फिनिटी एंड इनफिनिटेसिमल। अब इन्फिनिटी की हमारे पास हिस्ट्री क्या है? इन्फिनिटी हम उसको बोलते हैं जो हमारे पास बाउंडलेस हो, एंडलेस हो और लार्जर देन एनी नंबर। क्या आप कोई भी नंबर सोचते हो उसके बाद भी कोई नंबर होगा, तो और उसके बाद वाला नंबर आप कोई सोचते हो तो उसके बाद भी नंबर होगा। तो ये हमारे पास क्या कंसेप्ट होता है? इन्फिनिटी का कंसेप्ट होता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं। अब हम कम्प्लेक्स नंबर में अगर डिस्कस करें ना तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें हम इस तरह के एक्सप्रेशन को देखते हैं कि हमारे पास अब उसके रूट -1 है ना, ये हमारे पास नेचुरल, होल, इंटीजर किसी भी नंबर में नहीं आएगा, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर में नहीं आएगा। तो इसको हम एक इमेजिनरी कंसेप्ट देके कम्प्लेक्स नंबर में कर सकते हैं। तो अगर हम कम्प्लेक्स नंबर की हिस्ट्री को देखें तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर पे एक अलहदा वीडियो बनाएंगे हम। सो ये सिंपल कंसेप्ट है आपका कम्प्लेक्स नंबर का। अब कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास डिफरेंट वो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस आ जाते हैं। अभी हमारे पास डी मोइवर्स फार्मूला है, इसके बाद हमारे पास ये आइलर फार्मूला है। आइलर नंबर हमारे पास मैथ में एक होता है और कांस्टेंट नंबर होता है और इम्पोर्टेंट नंबर होता है। तो ये हमारे पास किसी भी डिफिकल्ट एक्सप्रेशन को सिंपली सोल्व करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला हम यूज करते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास फर्स्ट करें n की जगह पे 2 आ जाता है तो अब इन मैथमेटिक्स डी मोवियस फार्मूला स्टेट दैट फॉर एनी रियल नंबर x will be real and integer n it hold। अब इंटीजर से ये हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास जो n की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो क्लियर होगा। उसके बाद हमारे पास आइलर फार्मूला है, ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि हम अगर हमारे पास थीटा कोई एंगल है, फर्स्ट करें थीटा हमारे पास पाई के इक्वल है, तो अगर हम इधर पाई पुट करें तो हमारे पास क्या आंसर होगा? तो ये -1 आएगा। सो e की पावर एटा पाई हमारे पास किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। सिमिलरली these are expression related to complex numbers, so we will discuss in a separate lecture. So these are prime numbers. Prime number, what are prime numbers? So prime numbers are those numbers which are greater than 1 that is not a product of two smaller natural number, two smaller unique, you can say unique। के हमारे पास फर्ज करें 2 है तो अब 2 हमारे पास 2 स्मॉलर नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, लेकिन 1 हमारे पास जो है ना यूनिक नहीं होगा। जिस तरह 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 वो तो हम लिखते जाएंगे। अभी हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 5 है, तो 5 से छोटे किसी भी 2 नंबर नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में हम इसे नहीं लिख सकते। 7 है, 7 से छोटे 2 नंबर ऐसे हम नहीं ले सकते कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 7 आए। 13 है, 13 से छोटे हम कोई 2 नंबर ऐसे नहीं ले सकते नेचुरल नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 13 आए। सो इस तरह के नंबर को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। और 1 हमारे पास प्राइम नंबर शामिल नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 से छोटे कोई 2 नेचुरल नंबर नहीं मिलते यूनिक। 1 को 1 से बेशक 100 मरतबा मल्टीप्लाई करें आंसर तो हमारे पास 1 आएगा, लेकिन वो यूनिक नंबर नहीं होगी। यूनिक का मतलब जिस तरह 2 मल्टीप्लाई 1 यूनिक है, 5 मल्टीप्लाई 1 यूनिक नंबर है।
Okay, so this is main classification of number system. This is set of natural number. There is 0, 1, prime number, composite number. This is very beautiful picture. This is negative integer. This is rational. This is irrational. In the rational, right and transcendental number will be included. So in real number, rational and irrational both will be included. And in complex, all of these number will be included. This is number system and history of number system. After that, integers, rational number, real numbers, non-terminating, recurring, non-recurring, decimal, complex number. We will discuss about complex number in a separate video. These are some classes of integer, even and odd, prime number. Other classes of integer are as Fibonacci numbers and perfect number. Perfect numbers is a positive integer that is equal to the sum of its positive divisors. This is important concept. What is perfect number? What is composite number? And what are Fibonacci numbers? Perfect number is a number which is product of which is equal to sum of its positive divisor, like excluding the number itself. आपने नंबर को शामिल नहीं करना, लेकिन उसके जो डिवाइजर आप 6 है, इसके डिवाइजर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है और 6 भी है, लेकिन 6 को हमने एक्सक्लूड कर देना है, तो इनको सम करें तो हमारे पास 6 बनता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा. दिस इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अबाउट परफेक्ट नंबर्स. After that, these are Fibonacci number. This is Fibonacci number. If we sum previous two and get next number, these are called Fibonacci number and integer sequence. This is sequence of integers. There are types of polynomials. Monic polynomial. Monic polynomial is a single variable polynomial in which the leading coefficient is equal to 1. Therefore, a monic polynomial has the form. This is a standard form of monic polynomial. Constructible numbers, computable numbers. What are constructible numbers? In geometry and algebra, a real number R is constructible if and only if given a line segment of unit length, a line segment of length R dash can be constructed with the compass and straight straight edge in the finite number of steps equivalent. This is a form of constructed computable number. Computable number are real numbers that can be computed to within any desired precision by finite terminating algorithm. They are also known as the recursive number, effective number, or the computable area or recursive reals. P-adic number, this is not our topic. Hypercomplex number, transfinite number. Transfinite numbers are the numbers that are infinite in the sense that they are larger than all finite numbers, yet not transfinite. They are larger than all finite numbers, yet not necessarily absolutely infinite. They are not ये absolutely infinite नहीं है और finite से कुछ आगे है. This includes the transfinite cardinals. Okay. इनको हम कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स में डिस्कस कर सकते हैं. नॉन स्टैंडर्ड नंबर्स.
this was the concept of numbers and their application and complete history of these numbers. So this is end of our today's lecture.